Namaskar and welcome to the Tarot reading. Wish you all a very happy new year. Now, this is a reading for the sign of Virgos for the next 15 days, that is second half of January, from 1st to 15th of January. Now, please remember this is general reading, so it may or may not resonate with all of you. The energies can always shift and change, and remember that roles can be reversed, that is, this could be your energy or vice versa. And also remember that you can check your sun, moon, rising and Venus. Okay, so this is for sun, moon, rising and Venus for the sign of Virgo and you versus them. Here we will clarify your energy, your person's energy, the challenge you're facing in the relationship, outcome, and give you some advice from tarot. So let's start. So what is the Virgo feeling right now? What is the Virgo feeling right now, my love team? What is the current energy of Virgos? What is the current energy of Virgos? Let's see what is the current energy. Okay, Virgos, the current energy is Page of Wands. So, you want to communicate with your partner, you want to message, you want to approach your partner, and bottom of the deck, it is you only, Virgo energy. So, you are thinking a lot, you are in isolation, and you are feeling lonely also maybe, and you are thinking a lot how to talk to your partner, how to contact your partner. This is your energy, Virgos. Now let's see what is the energy of the person of Virgo for the next 15 days. What is the energy of the person of Virgo? What is the energy of the person of Virgo for the next 15 days, my love team? ओके वर्गो, तो आपके जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा बर्डनड है, या तो वो बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैरी कर रहे हैं आपकी लाइफ में, अपनी लाइफ में, या फिर दे वांट टू कॉन्टैक्ट यू. तो दे आर एक्चुअली कीपिंग एन आई ऑन यू. दे आर stalking you on social media, and they are trying to seek more information about you. They want to know about you. So both of you are in page energy. So like you want to communicate, and the other person is trying to get information on you, like what you are doing, आप क्या कर रहे हैं, कहाँ पे हैं आप, and they want to know more and more about you. So yeah, they want to they are carrying lot of burden because maybe you people are not in contact with each other. Now let's see what is the challenge, what is the blockage of this relationship, what is the challenge which this relationship is facing. So let's see what is the challenge which this relationship is facing for the next 15 days, my love team. The challenge is a star. तो जो चैलेंज आप दोनों फेस कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आप लोग को हीलिंग की ज़रूरत है, और आप लोगों को लगता है कि शायद दिस रिलेशनशिप इज़ लॉस्ट, एंड आपको लगता है कि शायद ये रिलेशनशिप फिर से रिवाइव नहीं हो सकती है, और आपको एक तरीके से आप बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं. तो जो इस रिलेशनशिप का चैलेंज है, इट इज़ लाइक यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक. तो आपको थोड़ा ऑप्टिमिज्म से सोचना चाहिए, आपको थोड़ा सा पॉजिटिव वे में सोचना चाहिए अबाउट दिस रिलेशनशिप. एंड you know this star card is all about future. What is the future of this relationship? और आप दोनों ही बहुत बर्डन कैरी कर रहे हैं. you are not able to clear with each other कि आप लोग what you want. So both of you need to be positive in this relationship, and have a more positive outlook,
and have a more कि आप लोग इस रिश्ते को इम्प्रूव कर सकते हैं. एंड यू शुड, अगर आप लोगों के बीच में कोई बात हुई है तो आप उसको हील करें. दिस इज़ व्हाट द चैलेंज इज. नाउ लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर वर्गो for the next 15 days. Let's see what's the outcome. What is the outcome of this relationship? The outcome is the Three of Wands. So Three of Wands came out in the reverse, but it means कि आप लोग जो है stuck feel कर रहे हैं और आप लोगों का देखने का नज़रिया धीरे धीरे चीज़ों को बदल रहा है. आप एक दूसरे के रिश्ते को अलग तरीके से देख रहे हैं. एंड यू बोथ आर लाइक, आप लोगों को पेशेंस की ज़रूरत है. सो द आउटकम इज़ दैट you will be looking into the future of this relationship. and आप लोग ये एनालिसिस कर रहे हैं कि आपने जो भी इस रिश्ते में इन्वेस्टमेंट की है, emotionally, mentally, physically, so you are waiting for each other. So as we have got ki you also want to message or you want to communicate with this person, and this person is also wanting to communicate with you. Page of swords is also communication card. So आप दोनों वेट कर रहे हैं कि कौन पहले कम्युनिकेट करता है. यू आर वेटिंग टू कॉन्टैक्ट ईच अदर एंड दिस इज़ अ वेटिंग एनर्जी. द आउटकम इज़ यू जस्ट आर वेटिंग एंड नोबडी इज़ वांटिंग टू टेक एनी एक्शन. ऐसा लग रहा है कोई एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहा है. यू आर जस्ट वेटिंग फॉर कम्युनिकेशन फ्रॉम ईच अदर. You are waiting maybe to that your partner should make the first move, or your partner is waiting that you should make the first move. So now let's clarify the Page of Wands for the next 15 days. Let's see what's this Page of Wands for the next 15 days, my love team. Let's see. Please show me the energy of Virgo for the next 15 days, that is from 1st to 15th of January. What is it that they want to communicate? Okay, we have got the Six of Wands, we have got the Fool, and we have got the High Priestess. तो आप कुछ रिलीज़ करना चाहते हैं वर्गो. आप इस पर्सन को आप इस पर्सन से अटेंशन चाहते हैं. एंड you want to take the risk of associating with them. You want to take a leap of faith. आप इस रिश्ते को नए सिरे से स्टार्ट करना चाहते हैं. और बिकॉज maybe you want to, or there are two scenarios. Either you want to communicate this person that you don't want this relationship, or maybe you want a new start with this person. Fool is a card, Aries energy, which shows that a brand new start in your life. You want to start something fresh efforts. लेकिन यहाँ पर ये clarity नहीं मिल रही कि आपको इस person, because at the bottom of the deck we have the 8 of swords, and there is lot of sadness and regret also. There is a major realization that आप दोनों के बीच में maybe relationship is not there. So there are two scenarios. Either you want to tell them that you want a fresh start with them, or you want to have a fresh start on your own. आप अपने आप में कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं और आप इस पर्सन को ये बताना चाहते हैं. तो there is very strong Piscean energy. Aries is also here. So now let's clarify the Page of Swords. Let's clarify the Page of Swords for the person of Aries, my love team. What is this Page of Swords? Okay, we have got the Queen of Swords, we have got the Ace of Cups, and we have got the Five of Swords. तो आपके पर्सन मेंटली आपसे एसोसिएटेड है, मेंटली वो जुड़े हुए हैं. दे आर कीपिंग एन आई ऑन यू. दे वांट टू मेक एन ऑफर ऑफ लव टू यू मे बी, बट दे फील दैट वो पीछे हट जाते हैं बिकॉज दे फील देयर इज़ लॉट ऑफ पावर स्ट्रगल हियर. देयर इज़ लॉट ऑफ control issues. There could be outside influences. This could be a feeling of a very negative feeling of competition. Maybe उनको लगता है कि इस रिलेशनशिप के लिए उनको दूसरों से आपके लिए फ़ाइट करना पड़ता है. But of course definitely there is Ace of Cups here, so there are emotions with you. But with the Queen of Swords, they want to, they are very very logical. They are very very
डिटैच्ड, वो कहीं से भी इमोशन से नहीं सोच रहे हैं. दे हैव इमोशंस बट their थिंकिंग पैटर्न इज़ वेरी मेंटल, and that is why they are keeping an eye on you. And of course your relationship has undergone a big change with the death card. Something has ended. Scorpio energy. Yeah, somebody's closed off, absolutely. So let's see what is the, let's clarify the star, which is your challenge. Let's clarify the star for Virgo. Let's clarify the star for Virgo. Yeah, we have got Hermit, we have got the Six of Pentacles, and we have got the Ten of Pentacles. Virgo, this is you only. तो मेरे ख्याल से वर्गो आप ही अपने लिए चैलेंज है, बिकॉज यू आर इन आइसोलेशन, आप कट ऑफ है, एंड यू आर थिंकिंग अ लॉट अबाउट इट. यू आर गोइंग इनसाइड, यू आर डूइंग लॉट ऑफ सोल सर्चिंग, यू आर डूइंग लॉट ऑफ इनर वर्क, और मे बी यू आर फोकसिंग ऑन योर ओन फ्यूचर, ऑन योर ओन मनी, ऑन योर ओन स्टेबिलिटी. 10 ऑफ पेंटिकल्स. सो ऐसा भी हो सकता है, और दिस कुड बी विद द अदर पर्सन दैट यू वांट टू बैलेंस योर कर्मा, बट आई थिंक इसके चांसेस कम है, बिकॉज अगेन द टावर इज एट द बॉटम ऑफ द डॉग डेक, and something is already broken in your relationship. कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में मन मुटाव हो चुका है, रिश्ता टूट चुका है, but you are thinking a lot maybe about your own future, और हो सकता है आपसे गलतियाँ हुई हो सकता है आपके पर्सन से गलती हुई हो, and you want to have a equal give and take with the person. So the challenge is that you कौन पहल करे, and यू वॉन्ट इक्वल गिव एंड टेक. सो इस रिश्ते में कहीं ना कहीं लैक ऑफ एनर्जीज रही है. किसी पर्सन ने ज़्यादा किया है, दूसरे ने कम किया है मे बी. सो दैट इज़ वाई this relationship is feeling stuck and it is not moving anywhere. Now the outcome is that you people are waiting. आप वेट भी कर रहे हैं और नहीं भी वेट कर रहे हैं, मतलब there is lack of hope also, but there is hope also. आप चाहते भी हो, नहीं भी चाहते हैं. So the outcome is that you are in a fixed energy कि you want it also and you don't want it also. You are not sure what is going to happen in the future. Okay, anyways, let's clarify the Three of Wands for Virgo. What is this Three of Wands? Yeah, we have got the Three of Swords, the Two of Cups, and the Sun. Yeah, you are very very heartbroken. That is why आप वेट भी कर रहे हैं, नहीं भी वेट कर रहे हैं. आपको उम्मीद है भी, नहीं भी है. कभी आपको लगता है कि यू शुड कॉन्टैक्ट द पर्सन, कभी लगता है कॉन्टैक्ट नहीं. आप दोनों को ही ऐसा लग रहा है. आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है. सो मे बी यू ऑलरेडी गॉट द क्लैरिटी. द कंक्लूजन में तो यही आ रहा है कि यू ऑलरेडी गॉट द क्लैरिटी. देयर वाज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन हियर. मे बी you people are broken up, you are in breakup, and it was a very very loving relationship, a very very emotional relationship here, and I feel that you have turned your back. Both of you have turned your back. तो आप लोग अपने ही फ्यूचर की ओर ज़्यादा फोकस्ड है. आउटकम में तो यही दिख रहा है, यू आर फोकस्ड ऑन योर ओन फ्यूचर, बट फ्रॉम इनसाइड you want that somebody should contact you, that your person should contact you, or your person also wants to contact, but because इसमें heartbreak है, इसमें there's some sort of outside influences, there's lack of equal give and take, there's lack of understanding, so that is why you're not sure. So now let's see what's the advice of the oracle deck for the Virgos. What is the advice? ओके, वी हैव गॉट ऑब्स्टिकल्स, देयर आर चैलेंजेस अहेड इन योर पाथ. तो आपके लिए एडवाइस है कि आप दोनों के बीच में चैलेंजेस हैं. द चैलेंजेस about equal give and take. The challenge is about maybe somebody wants a committed relationship here. वो शादी करना चाहते हैं maybe, or they want some sort of committed in some form they want a committed relationship. These are the obstacles, और उन्हें लगता है उनके साथ सही ट्रीटमेंट नहीं हुआ है. सो दिस इज़ देयर आर ऑब्स्टिकल्स विच यू हैव टू ओवरकम. फर्स्ट, please choose one direction, so you have to make a choice.
like what to do, and your counterpart is trying to reach to you. Yeah, they're keeping a tab on you online. They are following you online, and क्या क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं. So this is what I have for you, Virgos, for the next 15 days. I hope it helped. Please hit the like button if you like it, and see you next time. Bye bye.